गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेक्शन 6A की सिटीजनशिप एक्ट की उसको अपहोल्ड किया है। तो इसमें जो है सेक्शन 6A सिटीजनशिप देता है उन इमिग्रेंट्स को जो असम में एंटर हुए थे 1966 और 1971 के बीच में। तो सेक्शन 6A जो है असम अकॉर्ड्स के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 के बाद, जिसमें कहा था कि 1966 के बाद जो है उस 1966 को हम कट ऑफ डेट बना देते हैं और फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करने की। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन रखी गई थी सेक्शन 6A नाम की, जिसमें कि जो 1966 से लेके 1971 के बीच में एंटर हुए थे असम में, उनको सिटीज़न तो माना जाएगा लेकिन 10 साल के लिए उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। ठीक है। आफ्टर 1971 जो लोग एंटर किए हैं वो तो इलीगल इमिग्रेंट माने जाएंगे। ठीक है। तो अब सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट को चैलेंज क्यों किया गया? पटिशनर्स ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शन है और ये इक्वालिटी क्लॉज को वॉलेट करता है और एक डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है सिटीजनशिप का असम में ये सेट कर देता है। तो कंसर्न्स ये भी रेज़ किए गए कि अगर आप सिटीजनशिप माइग्रेंट्स को दोगे तो उससे कल्चरल और जो है इंडिजिनस राइट्स जो हैं असामीज़ लोगों के या असामीज़ पीपल के वो वायलेट होंगे। तो अब सेक्शन 6A में गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो सिटीजनशिप मैटर्स को रेगुलेट कर सकती है। सेंटर ने ये भी आर्ग्यू किया कि सेक्शन 6A जो है अगर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया तो बहुत से लोग हैं रेजिडेंट्स जो हैं वो स्टेटलेस हो जाएंगे। लगभग पिछले 50 साल से वो सिटीजनशिप है और उनको आप एकदम से एक सिर्फ वॉयलेशन एक सेक्शन को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कह दोगे तो वो हज़ारों लाखों लोग जो है वो सिटीजनशिप लेस हो जाएंगे। असम जो है वो बहुत ही डाइवर्स स्टेट रहा है हिस्टोरिकली, तो वहाँ पर हमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है, तो वहाँ पर हमें डेमोग्राफिक चेंजेस को देखते हुए अलग से प्रोविज़न ये लाना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग 5 जज बेंच की रूलिंग है, 4-1 मेजॉरिटी के साथ जो है ये वर्डिक्ट दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सिटीजनशिप राइट से डील करते हैं जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था। और जो सेक्शन 6A है ये इंडिविजुअल्स को डील करता है जो उस आर्टिकल 6 और 7 में जो है वो एलिजिबल नहीं है उससे, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने पर जो सिटीजनशिप नहीं जिनके पास नहीं थी, उन लोगों के लिए सेक्शन 6A निकाला गया है। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो डिफ़ाइन कर सके सिटीजनशिप क्राइटेरिया को, और यूनिक सर्कमस्टांसेस जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों ये डिफ्रेंसिएशन की गई है। सिचुएशन जो है असम में वो कोई वायलेट नहीं कर रही राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सिर्फ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स का प्रेजेंस होना, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जो कल्चरल राइट्स जो वहाँ के लोगों के हैं वो वायलेट हो जाएंगे। स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी के लिए जो है हम सेक्शन 6A ला सकते हैं। और एक क्लियर टाइमलाइन जो डिसेंटिंग ओपिनियन दिया गया है उसमें कहा गया है कि असम के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके जो है राइट्स वायलेट हो सकते हैं। जो एक जज हैं उन्होंने जो डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, उन्होंने बोला है कि सिटीजनशिप के जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी कॉम्प्लिकेट कर देगा ये मैटर। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो रीअफर्म कर रही है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो कि इमिग्रेशन और सिटीजनशिप इन इंडिया में हमें देखने को मिलती है, और मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन ने इसको लेजिटिमाइज तो कर दिया है, लेकिन फिर भी एक डिसेंटिंग ओपिनियन है कि जो है सिटीजनशिप जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके ऊपर इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जो है इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इस वर्डिक्ट से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो असम में लागू हो रहा है उसको भी एक तरह से बल मिलेगा, और ब्रॉडर नरेटिव जो है इमिग्रेशन का इंडिया में उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने डिसाइड किया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो 1976 में आई थी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है एम्प्लॉयज़ को ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ये EDLI स्कीम जो है मैनेज और एडमिनिस्टर की जा रही है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये स्कीम प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑन द लाइफ ऑफ द मेंबर एम्प्लॉय। ये स्कीम वर्क करती है इन कॉम्बिनेशन विद EPF और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट जो डिसाइड किया जा रहा है
वो लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय के बेसिस पर होगा। जो रजिस्टर्ड नॉमिनी होंगे वो रिसीव करेंगे लंप सम पेमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ईपीएफ मेंबर। जो इसमें मैक्सिमम अश्योर्ड बेनिफिट होगा वो अप टू 7 लाख होगा। मिनिमम अश्योरेंस बेनिफिट 2.5 लाख तक का होगा। लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट जो हैं ईपीएफओ के मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है। मिनिमल कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय का वो 0.5% रहेगा मंथली वेजेस का। ठीक है। कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को नहीं मेक करना पड़ेगा और बेनिफिट डायरेक्टली जो है इन केस ऑफ डेथ जो है वो जो भी नॉमिनी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेट्रा। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट को एक सीक्रेट टॉम मिला है पेट्रा में, जॉर्डन में, जिसमें कि 2000 ईयर्स ओल्ड स्केलेटन्स और एक शेलीज मिला है जो कि होली ग्रेल की तरह रिसेंबल कर रहा है। तो पेट्रा क्या है? एक हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल सिटी जो कि सदर्न जॉर्डन में लोकेटेड है। ये एक सेंटर था अरब किंगडम का हेलेनिस्टिक और रोमन टाइम्स में। पेट्रा को 312 एसी में इस्टेब्लिश किया गया था, लगभग मतलब 2000 साल पहले। और ये कैपिटल थी नबाशियन पीपल की, जो कि एक अरब ट्राइब थी। ठीक है। और ये नबाशियन रूल के अंदर पेट्रा प्रॉस्पर हुआ एज सेंटर ऑफ स्पाइस ट्रेड विद चाइना, इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया। रोमन्स ने कॉन्कर किया पेट्रा को 106 एसी में, और पेट्रा कंटिन्यू करता रहा ग्रोथ अपनी अंटिल 7th सेंचुरी, जब रोमन्स जो है वो वहाँ से जो है वो पावर लूज़ कर गए और इस्लाम वहाँ पर जीत गया। ठीक है। तो बहुत सी जो पेट्रा की बिल्डिंग्स है वो कार्व्ड डायरेक्टली हुई है रॉकी सैंडस्टोन क्लिफ्स में। सिटी ऑफ पेट्रा जो है वो बिल्ड की गई थी ऑन अ टेरेस विद वादी मूसा। पेट्रा में लगभग 800 टॉम्स हैं। पेट्रा को हम रोज़ सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कलर ऑफ द स्टोन्स हैं वो इस तरह का है, यूज़ किया गया है बिल्डिंग्स में। पेट्रा को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला है सिंस 1985। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस समर्थक। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने रिसेंटली लॉन्च किया है आईएनएस समर्थक, एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल इंडियन नेवी के लिए। तो ये फर्स्ट ऑफ द 2 मल्टीपर्पज़ वेसल्स है इंडियन नेवी के लिए बनाया गया जो। और ये वेसल इस तरह से, ये जो वेसल है इसको डिज़ाइन किया गया है और इन हाउस बिल्ड किया गया है एल&टी शिपयार्ड द्वारा कटुपली में, जो उनका अपना शिपयार्ड है। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट और टेस्टिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स एंड सेंसर्स फॉर इंडियन नेवी। ये कई तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा, जैसे मैरीटाइम सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग, इवन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सी पॉल्यूशन को कॉम्बैट करना। मैक्सिमम स्पीड इसकी 15 नॉट्स तक जा सकती है। अब अगर हम याद रखें तो एल&टी का जो कटुअली शिपयार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एन्नोर में लोकेटेड है ये, चेन्नई के पास, तमिलनाडु में। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ है इंडिया में। करंटली ये 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है और 6 अदर डिफेंस वेसल्स बना रहा है ये इंडियन नेवी के लिए अंडर पीपीपी मॉडल। इवन यूएस नेवल शिप चार्ल्स ड्रू एक मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट के साथ यूएस नेवी के साथ, उसकी भी रिपेयर जो है ये जो आपका शिपयार्ड है ये कर रहा है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो एक हायर इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड फेस करेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री ओवर द नेक्स्ट 1 डेकेड। एज ये हमें वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक बता रहा है 2024। तो एक एनुअल रिपोर्ट होती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है, और ये मोस्ट अथॉरिटेटिव ग्लोबल वॉइस है, ग्लोबल सोर्स है एनर्जी एनालिसिस और प्रोजेक्शंस का। ये आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोर करता है बिगेस्ट ट्रेंड्स इन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई। प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो आपके बताते हैं कि वर्ल्ड कैसे जो है न्यू एनर्जी कंटेक्स्ट में जो है वो जा रहा है। तो इस रिपोर्ट की हाईलाइट कह रही है कि एक सरप्लस ऑफ ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सेकेंड हाफ ऑफ 2020s में। रिपोर्ट ने ये भी फाइंड किया कि लो एमिशन एनर्जी सोर्सेज जो है वो ज़्यादा या फिर हाफ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड की जो है जनरेट करेंगे बाय 2030। डिमांड फॉर कोल, ऑयल और गैस जो है वो पीक होने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। इंडिया से रिलेटेड उन्होंने जो है वो कहा है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ इन एनर्जी डिमांड देखेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री ओवर द नेक्स्ट 1 डेकेड। इंडिया जो है वो 12,000 कार्स हर रोज़ ऐड करने वाला है अपनी रोड में ओवर द पीरियड टू 2035 और 2035 तक आयरन और स्टील प्रोडक्शन इंडिया में 70% तक ग्रो होगा। सीमेंट आउटपुट जो है वो लगभग 55% तक राइज करेगा। स्टॉक ऑफ एयर कंडीशनर्स जो है वो प्रोजेक्टेड है कि वो लगभग 4.5 टाइम्स ग्रो करेगा। टोटल एनर्जी डिमांड जो है इंडिया की
वो लगभग 35% से इंक्रीज़ करेगी बाय 2035। कोल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिटेन करके रखेगा, और बाय 2035 कोल यूज़ जो है इंडस्ट्री में वो 50% से ग्रो होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने थर्ड हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो इनाग्रेट किया है। तो इसको 2019 में एक्चुअली लॉन्च किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ये प्रायोरिटाइज़ करता है कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को जहाँ पर पॉवर्टी और हंगर हाईएस्ट लेवल पर है। ठीक है, तो ये सीख करता है कि इरेडिकेट किए जाए पॉवर्टी को, एंड किया जाए हंगर और माल न्यूट्रिशन को, और रिड्यूस की जाए इनक्वालिटीज़ को। ये जियो स्पेशल बायोफिजिकल और सोशो इकोनॉमिक डेटा का यूज़ करता है, और ये इसमें क्या होता है कि उन कंट्रीज़ में वैल्यूज़ चेन्स को जो है प्रायोरिटी कम्युनिटीज़ की वो डेवलप करना, बिल्ड करना, एग्रो इंडस्ट्रीज़ को एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप करना, डिजिटल सर्विसेज और प्रिसिशन एग्रीकल्चर लेकर आना, ये सब एरियाज़ ऑफ इंटरवेंशन है। 72 कंट्रीज़ ऑलरेडी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, FAO तो हम पिछले कई दिनों से लगातार पढ़ रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की, रूरल पॉपुलेशन की इंक्रीज़ करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सारथी सिस्टम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली जो है, उन्होंने सोलर असिस्टेड रीफर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बनाया है हाइब्रिड कंट्रोल्स और इंटेलिजेंस के साथ, जिसका नाम सारथी सिस्टम बन रहा है। तो ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को पेरिशेबल फूड ट्रांसपोर्टेशन में रिड्यूस करने का। तो इसमें ड्यूअल कंपार्टमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि स्टोर किए जा सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और एड्रेस की जा सकती है उनकी यूनिक स्टोरेज नीड्स को। तो इसको IoT और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें सेंसर जो है वो मेजर करेंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एथिलीन और CO2 लेवल्स। सिस्टम जो है वो उसमें एक सोलर पावर्ड एयर हैंडलिंग यूनिट भी है, जो कि इंश्योर करेगा टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग हॉल्ट्स। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जो है इसका, ये हेल्प करेगा एक्सटेंड करने को शेल्फ लाइफ, और रिड्यूस करेगा लॉसेस ड्यू टू चिलिंग, इंजरी और मॉइस्चर लॉस। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टर्स को हेल्प करेगी कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें और रीराउट कर सकें प्रोड्यूस को क्लोजर मार्केट्स पे अगर स्पॉइलेज डिटेक्ट होती है तो। ठीक है, कट कर सकते, इसकी वजह से जो है एनर्जी वेस्ट कम होगा और कार्बन फुटप्रिंट्स भी रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्राउन ड्वार्फ। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट पजल्ड हैं ओवर द ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ग्लीज 229b, जो कि फर्स्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ है जो 30 साल पहले डिस्कवर किया गया था। तो ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं? समटाइम्स इन्हें हम फेल्ड स्टार्स भी कहते हैं, बिकॉज ये स्टार्स से लाइट होते हैं, लेकिन जो है हैवियर होते हैं ये गैस जाइंट प्लैनेट से। ये ऑब्जेक्ट जो है ये, इनका साइज़ जुपिटर प्लैनेट जितना भी हो सकता है और एक स्मॉल स्टार जितना भी हो सकता है। ब्राउन ड्वार्फ्स जो है वो अक्यूमुलेट करते हैं मटेरियल जस्ट लाइक एनी स्टार, नॉट लाइक अ प्लैनेट। और ये इनके जो क्लाउड्स होते हैं, उनके जो इनमें जो क्लाउड्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट से बने होते हैं उनके एटमॉस्फेयर से। ये होल्ड करते हैं लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम को मोर इफेक्टिवली रादर दैन एनी अदर प्लैनेट, और इनका रिलेटिवली लो मेटल कंटेंट होता है इनमें। ठीक है, तो इनके पास इतना मास नहीं होता कि इनके कोर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न कर सके। ब्राउन ड्वार्फ्स जो है वो स्टेबल ल्यूमिनोसिटीज़ भी रीच नहीं कर पाते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से नॉर्मल हाइड्रोजन के। ओके, अगर इसका हम कंपैरिजन देखें ब्राउन ड्वार्फ्स और स्टार्स का, तो ठीक है, तो स्टार्स तो नहीं कर पाते हैं, स्टार्स कर पाते हैं, ब्राउन ड्वार्फ्स ये जो है ल्यूमिनोसिटीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is Section 6A of Citizenship Act. This topic is important for our polity section. So in a landmark decision, the Supreme Court of India has upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act of 1955. This section grants citizenship to certain immigrants who have entered Assam between 1966 and 1971. So Section 6A was introduced following the Assam Accord of 1985, which aimed to address concerns regarding migrants from Bangladesh. The Assam Accords established January 1966 as the base cutoff date for identifying foreigners in Assam. This was meant to mitigate the socio-political tensions which arose after immigration in the state. But under this section,
Individuals of Indian origin who entered Assam before January 1966 were deemed as citizens, but there was this Section 6A exception. So basically, those who entered before 1971, but after this 1966 date, they can be registered as citizens, but they will not be included in the electoral rolls for 10 years. So anyone basically who entered after 1971 would be classified as an illegal immigrant. Okay, so why was Section 6A of the Citizenship Act challenged? So petitioners, including NGOs like Assam Public Works and Assam Samilita Mahasangh, argued that Section 6A is discriminatory and it violates the equality clause of the constitution. They contended that it sets a different standard for citizenship in Assam compared to the rest of India, which is July 1948. So concerns were also raised that granting citizenship to migrants would infringe upon the cultural rights of indigenous Assamese people under the Article 29(1) of the Constitution. The government defended Section 6A by citing Article 11 of the Constitution, which empowers the Parliament to regulate citizenship matters. The centre also argued that if Section 6A were to be struck down, a vast number of residents would risk being rendered stateless after enjoying citizenship for over 5 decades. The centre highlighted that Assam has historically been a diverse state with demographic changes influenced by various geopolitical factors. So, what is the ruling of the court? So, the ruling was delivered by a 5-judge bench led by Chief Justice of India with a 4-1 majority. So, Chief Justice said that Article 6 and 7 of the Constitution pertain solely to the citizenship rights which were there at the time of Constitution's inception, that is the 1948 period. But in contrast, Section 6A addresses individuals who are not covered by these articles. So, Parliament also has the authority to define citizenship criteria based on unique circumstances, and these unique circumstances justify this differentiation. The situation is in Assam warranted a specific legal framework, and it did not violate the right to equality under Article 14 of the Constitution. So, court also said that mere presence of diverse ethnic group does not mean that it will undermine the cultural rights, and Section 6A embodies the spirit of fraternity among them. So, the dissenting opinion is saying that this Section 6A will undermine the indigenous people's rights of Assam, and it will also complicate the citizenship verification process. The Supreme Court ruling has reaffirmed the complexities surrounding immigration and citizenship in India. While the majority opinion legitimizes this law based on the unique context of the state, the dissent opinion raises critical questions about the rights of indigenous population and the practical implications of citizenship verification process. This verdict will influence the ongoing discussions of NRC in Assam and the broader narrative of immigration in India. Okay. So the next topic is employees deposit linked insurance scheme. This topic is important for your social issues. So center has decided to extend the providing the benefits of employees deposit linked insurance scheme to all subscribers of EPFO and their family members until further notice. So EDLI is an insurance scheme which was launched by government in 1976. This scheme was launched with the objective of providing social security benefits to the employees of the private sector, and this EDLI scheme is managed and administered by the EPFO, and the scheme provides life insurance cover on the life of the member employee. This scheme works in combination with EPF and employees pension scheme. The extent of the benefit which is decided by the last drawn salary of the employee. The registered nominee of the EDLI scheme receives a lump sum payment in the event of death of the EPF member. So what are the features of the scheme? The maximum assured benefit is up to 7 lakh, minimum assurance benefit is of 2.5 lakh. The life insurance benefit given to the EPFO member is free of cost for the PF or EPF account holders. The minimal contribution by employer is at 0.5%, and no contribution will be made by the employee. Okay, so benefit will be directly credited to the bank account of the legal heir or nominee. Okay. So the next topic is Petra. This topic is important for your art and culture section. So archaeologists have uncovered a secret tomb in Petra, that is in Jordan, revealing a 2,000-year-old skeleton and a chalice resembling the Holy Grail. So what is Petra? It's a historic and archaeological city located in southern Jordan. It was the center of an Arab kingdom in Hellenistic and Roman times. So it was established in 312 AC, which makes it around 2,000 years old. It became the capital of Nabatean people, an Arab tribe who were referred to in the Bible. Under Nabatean rule, Petra prospered as a center of the spice trade, which involved such disparate realms like
China, Egypt, Greece, and India. The Romans conquered Petra in 106 AC, and Petra continued to grow. And in the 7th century, the Romans lost the power of Petra to Islam. Many of the Petra's buildings were carved directly into rocky sandstone cliffs. The city of Petra was built on a terrace with the Wadi Musa, and Petra is home to roughly 800 tombs. Therefore, it is known as the Royal Tombs, which is with the most renowned being the treasury. Petra has also been referred to as the Rose City because of the color of the stones used in this building, in its buildings. Petra has been classified as the UNESCO World Heritage Site since 1985. So the next topic is INS Samarthak. This topic is important for your security section. So Larsen and Toubro has recently launched the INS Samarthak, which is a multi-purpose vessel for the Indian Navy. So it is the first of the two multi-purpose vessels for the Indian Navy, and it was designed and constructed in-house by Larsen and Toubro shipyard at Kattupalli. So it's a highly specialized multi-role platform designed to support the development and testing of next-generation weapons and sensors for the Indian Navy. It will also perform a variety of other functions including maritime surveillance, patrolling, launching and recovering surface and aerial targets, providing humanitarian assistance and combating sea pollution. So the vessel can achieve a maximum speed of 15 knots. So what is the Kattupalli shipyard of L&T? It is located in Ennore, that is about 45 kilometers north of Chennai. It is one of the most advanced shipbuilding and ship repair facilities in India. So it is apart from this two multi-purpose vessels, Kattupalli shipyard is also constructing the 3 cadet training ships and 6 other defense vessels for the Indian Navy under a PPP model. This yard is also involved in a repair of the US naval ship Charles Drew under a master ship repair agreement with the US Navy. Okay. So the next topic is World Energy Outlook 2024. This topic is important for your economy section. So India is poised to face a higher increase in energy demand than any other country over the next 1 decade, according to World Energy Outlook 2024. So World Energy Outlook is an annual report published by the International Energy Agency. It is the most authoritative global source of energy analysis and projections. It identifies and explores the biggest trends in energy demand and supply. So projections. What are the highlights of this report? So projections based on current policy settings indicate that world is entering a new energy context, and this we can see that a surplus of oil and liquefied natural gas will be there in second half of 2020s, and the report has also found that low emission energy sources will generate more than half of the world's electricity by 2030, and the demand for coal, oil and gas is expected to peak by the end of this decade. So what are the highlights related to India? So India is poised to face a higher increase in energy demand than any other country over the next 1 decade because of its size and scale of rising demand from all sectors. According to this stated policy scenario, India is on track to add over 12,000 cars daily on its roads over the period to 2035. By 2035, iron and steel production is on track to grow by 70%. The cement output is set to rise by nearly 55%. The stock of air conditioners is projected to grow by over 4.5 times. The total energy demand in India is set to increase by nearly 35% by 2035, and coal is set to retain its strong position in the energy mix in India over the next few decades. And by 2035, coal use in industry is expected to grow by 50%. So the next topic is hand-in-hand initiative. This topic is important for your social issues and also your economy section. So Food and Agriculture Organization has opened the third hand-in-hand investment forum, which was launched in 2019 as part of or as a flagship of Food and Agricultural Organization. It prioritizes countries and territories where poverty and hunger are highest, national capacities are limited, or operational difficulties are greatest due to natural or man-made crisis. So it seeks to eradicate poverty and hunger, malnutrition, and reduce inequalities. So basically, it will use geospatial, biophysical, and socioeconomic data as well as advanced analytics to identify territories where agriculture transformation and sustainable management of forest has the greatest potential to alleviate poverty and hunger. So in that context, interventions will be made, including developing value chains for priority commodities, building agro industries and efficient water management systems, introducing digital services and precision agriculture. So 72 countries have already joined this initiative. So what is FAO? It is a specialized agency of UN which
was formed in October 1945 to improve nutrition, increase agricultural productivity, raise the standard of living in rural population, and contribute to global economic growth. Its headquarters is located in Rome. So the next topic is Sarthi system. This topic is important for your economy section. So National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, has introduced this solar assisted reefer transportation with hybrid controls and intelligence system called the Sarthi system. So basically it's an innovative solution to reduce post harvest losses in perishable food transportation. It features dual compartments designed to store fruits and vegetables at different temperatures, addressing their unique storage needs. It is an integration of Internet of Things and real-time monitoring. So the data which will be acquired from the sensors will be integrated with IoT, and the information will be sent to the cloud, which can be downloaded using a mobile app for getting real-time information about the quality parameters and physiological changes which occur during the transportation of fresh fruits and vegetables. So its sensors will measure the temperature, humidity, ethylene, and CO2 levels, and it will send the data to mobile app for quality assessment. The system also includes a solar powered air handling unit, which ensures temperature control during hots. Okay, so this design will help extend shelf life and reduce losses due to chilling, injury, or moisture loss. This technology will also allow transporters to make informed decisions, potentially rerouting the produce closer to markets if spoilage is detected. Okay, so it will cut energy waste and it will reduce carbon footprints as well. So the next topic is brown dwarf. This topic is important for your science and tech section. So scientists have puzzled over the object known as Gliese 229b, and it is the first known brown dwarf discovered 30 years ago. It is actually twins orbiting each other. So brown dwarfs are sometimes called failed stars because they're lighter than stars, but they're heavier than gas giant planets. So these objects have a size between that of a giant planet like Jupiter and that of a small star. Brown dwarfs accumulate material like a star, but not like a planet. So they can have clouds made of precipitates in their atmosphere. While we have water clouds on Earth, the clouds on brown dwarfs are much hotter and likely made up of hot silicate particles. So thus they hold on to their lighter elements like hydrogen and helium more effectively than the planets, and they have a relatively low metal content. They do not have enough mass for their cores to burn nuclear fuel as well, and they radiate starlight, which is why they are sometimes referred to as failed stars. So, as compared to other stars, brown dwarfs do not reach stable luminosities by thermonuclear fusion of normal hydrogen. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday with new topics. Until then, goodbye and take care.